Moving on now, 5 North Indian states are battling floods following a late monsoon surge that has resulted in swollen rivers in the plains and landslides in the hilly areas. The flood situation in Uttarakhand remains grim, while several areas in Himachal Pradesh and Jammu Kashmir are too inundated. Meanwhile, Uttar Pradesh and Bihar are also battling flood situation resulting from incessant rains as well as a flow of additional water from the hilly areas of Nepal. Continuous rains have lashed Uttarakhand in the last 3 days, resulting in floods and landslides across the state. The Met Department says the rains will continue for the next 24 hours. The death toll in the floods have reached 52. Pauri, Dehradun, Rishikesh and Uttar Kashi are the worst affected, while the Ganga River is in a spate in Haridwar. Meanwhile, rescue efforts are continuing on a war footing to reach those who were stranded following a cloudburst on Friday. 7 साढ़े 7 के लगभग फटा। घर में 2 आदमी थे और इसमें दोनों मियाँ बीवी तो मतलब बच्चे उनके बाहर रहते हैं। तो सुबह गाय को चारा देने बाहर आए, बारिश की वजह से अंदर चले गए। उसके बाद एकदम जोरदार आवाज़ हुई और एकदम हमने बाहर आके देखा तो दबे हुए थे। हमारी पूरी जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे पहुँची हुई है। चूँकि अभी बारिश लगी हुई है, हम अभी डेड बॉडियों को रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही थोड़ा बारिश हल्की होती है हम रेस्क्यू शुरू करके जो है जो डेड बॉडी हैं उनको रिकवर करेंगे। और जो ये आसपास एरिया के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर और बारिश होने से जो है खतरा पैदा होने की संभावना है, उन लोगों को हम कहीं जो है दूसरी जगह शिफ्ट करने जा रहे हैं।